Hello everyone, let's continue with the compiler design. So we have done the lexical analyzer. Next we'll discuss about the syntax analyzer. So we know that lexical analyzer that will what it will do that once it is passing through the lexical analyzer, here it will generate the stream of tokens, right? Here it will generate stream of tokens. After that it is given to the syntax analyzer, right? It is given to the syntax analyzer, and syntax analyzer that will generate the parse tree, right? So it will generate the parse tree. How it is generating the parse string? With the help of these tokens and with the help of grammar और tokens की help से क्या करेगा? It will generate the parse tree. So now we'll discuss about the grammar here. Already we know about the grammar. I think we have seen in the theory of computation what is grammar. Let's see once more. So grammar, as we know that grammar is what it is a it is the set of rules. Grammar is what? Set of rules. Okay, then grammar having the five tuples. Already we have seen in TOC grammar having five tuples. One is a V, then T, P and S. What is V? V is the set of variables, right? So V is what? Set of variables. And T is what? Set of terminals. So here it is set of terminals. And P is the production rule, right? P is representing the production rule, and S is the start symbol. S is what? It is the start symbol, right? So now if we discuss about this grammar, that there is a grammar E goes to E plus T, then E plus T, or it is E star E, or it is ID, right? Or it is ID. So in this case, what are the variables? So variable is only E. E is the variable. And what are the terminals? So in this case, terminals are, here it is plus, star and ID. These are the terminals, right? So these are the variables and these are the terminals. Variable is single, that is E, and terminals are plus, star and ID. These are the terminals. Okay, so is it clear till this part? Okay. Okay, so here grammar is this one. It is E goes to E plus E, or it can be replaced with E star E, or it can be ID, right? ठीक है. Next क्या होगा? Next से assume that there is a string given, that ID plus ID star ID plus ID star ID. How to generate this one, right? So how to generate this one? Let's see.
So what we want to generate, it is id plus id star id. Then we can take this production, e goes to e plus e, right? So we can take this production, e goes to e plus e, right? Now next thing, we require the id here, after that plus. So if we replace this one with id, then it is plus. Okay, so now what will happen, now we are replacing this one with id. So here it is id, right? So in the next step, what we are doing, we are replacing e with id. E can be replaced with id. So here it is id plus e, id plus e. Now what we require, we require again id, and we require star id, right? So what we can do, we can replace this one with this expression. So e को क्या किया जा सकता है, इस नेक्स्ट टाइम इस ई को रिप्लेस किया जा सकता है, किसके साथ, इसको रिप्लेस किया जा सकता है ई स्टार ई के साथ. तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, इट इज आई डी प्लस ई को रिप्लेस कर दिया किससे, ई स्टार ई से, राइट? सो वी हैव रिप्लेस्ड ई विद ई स्टार ई. नाउ व्हाट विल हैपन, next time what we can do, we can replace this e with the id, because we require id, id plus id. So id, then we require again id. So here we can replace this e with id. So in the next step, what will happen, it is id plus id, then star e. Now in the next step, what we require, id plus id plus id. We have got id plus id plus id plus id, after that star. Now we require id, so we can replace this e with id, right? So let's replace this e with id. Okay, so now it become id plus id star id, right? Now we have generated this string with the help of this grammar, right? तो इस grammar की help से हमने क्या कर दिया, इस string को कर दिया generate. Okay, so is it clear till this part? ओके फाइन. सो सेम स्ट्रिंग को जनरेट करने का एक और भी वे हो सकता है, राइट? व्हाट इज दैट वे, लेट्स सी. सो हियर इट इज id plus id star id. Then how to generate, there can be the another way, let's see. So here first time this e can be replaced with this e plus e. So e that can replaced with e plus e. Okay, next time what will happen, next time what will happen, let's see. So this e can be replaced with e star e, right? So e can be replaced with e star e, means this e can be replaced with e star e. So in the next step, what we are doing, e plus e star e. Okay, and in the next step, what we'll do, in the next step it is e plus e star e. So instead of this e, we can replace with this one. So e can be replaced with id. So here we can put id. So we got id, after that star, id then star, right?
Now in the next step what we'll do, next step this e plus e, this e can be replaced with id, so we can replace this e with id. Okay, so id, here it is star id. Now in the next step what will happen, next step we can replace this e with id, so here it is id plus id star id, right? So we have got this string from this grammar, तो हमने इस स्ट्रिंग को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, राइट? दोनों टाइम हमने जनरेट कर लिया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो वन थिंग, इस वाले केस में क्या कर रहे हैं, इस वाले केस में हमेशा हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है इसको रिप्लेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने इस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस किया, और इसमें भी हमने क्या किया, इस ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ई बच गया था, इसको ई स्टार ई से, फिर हमने क्या किया, इनमें से हम इसको भी तो रिप्लेस कर सकते थे ना, बट हमने किसको किया, लेफ्ट वाले को रिप्लेस किया, राइट? और फिर लास्ट में जो बच गया उसको, तो जब लेफ्ट वाले वेरिएबल को क्या किया जाता है, हर बार रिप्लेस करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज नोन एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट? तो हमने क्या किया, डिराइव किया, इस स्ट्रिंग को हमने डिराइव किया किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से हमने इसको डिराइव किया। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्या मतलब होता है कि जब भी वेरिएबल को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वेरिएबल से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? इस वाले में हमने देखा पहली बार हमने इसको ई से रिप्लेस किया, फिर नेक्स्ट टाइम इस ई को आईडी से रिप्लेस किया, फिर नेक्स्ट टाइम ये राइट वाली को किया, लेफ्ट वाले को भी तो कर सकते थे, बट हमने इसको रिप्लेस किया, इस ई को आईडी से रिप्लेस किया, और उसके बाद इस ई को आईडी से रिप्लेस किया। इसका मतलब अब क्या कर रहे हैं, राइट वाली ई को क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब राइट वाली ई को अगर राइट वाले वेरिएबल को अगर रिप्लेस करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, that is known as rightmost derivation, right? So we have derived this string with the help of rightmost derivation here, ठीक है? तो इस स्ट्रिंग को हमने क्या कर लिया, डिराइव कर, इस स्ट्रिंग को हमने ड्राइव किया किसकी हेल्प से, राइट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से, और हियर इट इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो फाइनली you got this one, left most derivation and right most derivation or not? Okay, fine. Okay, now let's see the next thing. Just a minute, there is some issue.
wait a minute. Yes, now it is visible or not? And am I audible? Okay, okay, fine. Okay, for this string, using this grammar, using this grammar for this string, there can be more than one leftmost derivation. How it can be? Let's see. So here this e can be replaced with e star e, right? Initially we have replaced with e plus e, but we can replace with e star e also. So we have replaced this one with e star e. Now what we are doing in the next step? What we are doing in the next step, this e can be replaced with this e can leftmost e can be replaced with e plus e, then it is star e. Now this e can be replaced with id, so here it is id plus e star e. And in the next step, what we can do, in the next step, this e can be leftmost e, right? So here it is id plus this e can be replaced with id, right? So here it is id star e. In the next step, this e can be replaced with id, so here it is id plus id star id, right? So finally we have generated this string or derived this string with the help of again leftmost derivation, because हर बार क्या कर रहे हैं, leftmost variable को क्या कर रहे हैं, replace कर रहे हैं, right? It means again there is a leftmost derivation. Let me say leftmost derivation, that is 2. Here leftmost derivation for, okay, it is lmd1 and here it is lmd2. Means for the same string there are two leftmost derivation, right? Then what we can say, if then we can say that this grammar is what, this grammar is ambiguous. तो क्या कह सकते हैं, this grammar is ambiguous. Okay, so we can say this grammar is ambiguous. Okay, just a minute, so you can note this point. You can note if there is more than one, if there is if there is more than one leftmost derivation or rightmost derivation, leftmost derivation or rightmost derivation for the for the same string same string for the same string, then grammar is called ambiguous. Then that grammar is
ambiguous. Okay, then that grammar is ambiguous. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली ग्रामर क्या है, एम्बिग्यूअस ग्रामर है, बिकॉज इस ग्रामर में इस सेम स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रहे हैं. जब एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाएंगे सेम स्ट्रिंग के लिए, तो क्या बोल सकते हैं, आइदर इट इज़ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या फिर एक से ज़्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन अगर बन जाए तो बोलेंगे कि ये ग्रामर क्या है, दैट ग्रामर इज द एम्बिग्यूअस ग्रामर. ठीक है, तो उस ग्रामर में क्या है, एम्बिग्यूटी है, दैट ग्रामर इज द एम्बिग्यूअस ग्रामर. राइट, तो हम किससे चेक कर सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं. और इसको चेक करने का एक दूसरा वे भी होगा, वो वाला वे क्या रहेगा, दैट वी कैन चेक बाय द parse tree. We can generate the parse tree for the same string, and if we are getting more than one parse tree for the same string, then the grammar is the ambiguous grammar. Okay, so is it clear till this point? Okay, next let's see. So we have seen that grammar is, that is e goes to e plus e, or it can replaced with e star e, or it can be id. id, and here string is what, it is id, id plus id star id, id plus id star id. Okay, for this string we can generate the parse tree. How to generate the parse tree, let's see. So let's see the parse tree. Here it is e. E can be replaced with what, e can be replaced with e star e. So here it is replacing with e star e. Then this e can be replaced with again e plus e, right? So it can be replaced with this one, e plus e. Next, this e can be replaced with id. We know that e can be replaced with id also. So id, or this e can be replaced with id, and this e can be replaced with id. Okay, so finally what it is generating, here it is generating id, it is generating id, then it is generating plus id plus id, then it is star id, star id. Okay, so with the help of this parse tree we can generate this string. Okay, now let's see the one more parse tree, that can be e. E can be replaced with e plus e, and this e can be replaced with id, and this e can be replaced with e star e, and here this can be replaced with id, and this e can be replaced with id. Now what it is generating, we'll start from this one. Here it is generating id plus id, okay. So we are scanning the parse tree, right? So here it is a star, and after that it is id. Okay, so finally what it is generating, it is generating id plus id star id. Here also id plus
id star id. It means for the same string, there is more than one parse tree. This is what parse tree number 1, and here it is parse tree number 2 for the same string. If there are more than one parse tree for the same string, then grammar is ambiguous, right? So we can say, if there are more than one parse tree, for the same string, then grammar is ambiguous, right? In that case, grammar is what? Ambiguous. Why it is ambiguous? Let's see. So this id can be replaced with the 2. Here this id can be replaced with 3, assume. Okay, so this id can be replaced with 3, and this id can be replaced with value 4. Okay, in this case, what will happen? So in this case, what will happen here? If we traverse this one, initially it is id, so this id can be replaced with the 2. Again it is plus, then id means here it is 3, and in between this plus sign. After that again traverse, then here it is 4, and here it is star. So what will happen? Here in this case, it is firstly what we are doing, we are performing this plus operation, right? 2 plus 3, 2 plus 3, that is 5, and 5 multiplied by 4, that is 20. So its result is 20. Now in this case, what is happening here? This id can be replaced with the 2. Here it is 2, 3 and 4. Okay, so this id replacing with 2, this id is replacing with 3, and this id is replacing with 4. Okay, so what it is happening here? It is plus and here it is star. तो इन दोनों में से प्लस या स्टार कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है पहले? तो जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस है और उसके बाद 3 और फिर स्टार, तो पहले ये वाला एग्जीक्यूट किया जा रहा है, राइट? सो 3 और 4 को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मीन्स 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 12, एंड उसके बाद क्या किया जा रहा है? यहाँ पे प्लस किया जा रहा है इस 2 और इसके रिजल्ट को, राइट? इसका रिजल्ट क्या आ गया? 3 + 4 दैट इज 12. तो इस ई की वैल्यू क्या होगी? 12, और इस ई के वैल्यू क्या होगी? दैट इज 2. तो इनको ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू निकलेगी, राइट? सो इट इज ऐड 2 ऑल्सो, ठीक है? तो 3 + 4 दैट इज 12 और +2 दैट इज 14, राइट? तो इस वाले से क्या आ रहा है? रिजल्ट इज 20, और इस वाली पार्ट्स ट्री से रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज 14, राइट? तो दोनों रिजल्ट क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस. ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, so here there may be the question like how to find the grammar, how to find grammar. Grammar is ambiguous or unambiguous? ग्रामर इज एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस, ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, दैट हाउ टू कन्वर्ट ambiguous grammar
ambiguous grammar to unambiguous grammar. Ambiguous grammar to unambiguous grammar. How to convert ambiguous grammar to an unambiguous grammar, right? So in this case, is there any algorithm exist? Okay, so for this one we can say, to find out how to find out the grammar is ambiguous or not, there is no algorithm, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए कोई एल्गोरिदम नहीं है कि ग्रामर एम्बिग्यूअस है या फिर एम्बिग्यूअस है, बट हमें तरीका पता है कि कैसे पता चलेगा, राइट? व्हाट अबाउट सेकंड, हाउ टू कन्वर्ट द एम्बिग्यूअस ग्रामर टू एन एम्बिग्यूअस ग्रामर? here here also there is no algorithm, right? For this one also no algorithm. इसके लिए भी क्या नहीं होता? एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता है. Okay, now let's see one question. Here grammar is given, it is A goes to A or A or A, right? And this is what the grammar given, and string equal to W is the string equal to A, right? For this string, check out this grammar is ambiguous or unambiguous. Okay, so tell me, this grammar is ambiguous or unambiguous? Ambiguous. Okay, so here if we observe this one, that we want to generate A, then one parse tree can be, let me say it is parse tree number 1, that is A can be replaced with A, and this A can be replaced with further A, right? तो इसको किससे किया? A से रिप्लेस किया और फर्दर इस A से रिप्लेस कर दिया. Here it is generating what? A, again it is generating A, so it is generating A. What about parse tree 2? Parse tree 2, here it is A can be replaced with this production, so here it is A, and this A can be replaced with A, right? Now we can generate, it is A, here it is again generating A, means it is generating A, right? So for the same string, there are two parts tree, it means this grammar is what? Ambiguous. Okay, so this grammar is ambiguous. एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, कोई ग्रामर देती जाएगी और पूछा जाएगा कि दिस ग्रामर इज एम्बिग्यूअस और नॉट, तो उसके लिए आपको कोई सूटेबल स्ट्रिंग चूज करनी पड़ेगी और उसको थोड़ा एनालाइज करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो दैट ग्रामर इज एम्बिग्यूअस और दैट इज एन एम्बिग्यूअस, राइट? अगर कहीं पे भी आपको मिल जाए कि एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रही है या एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन बनेगा, then we can say that grammar is ambiguous. Okay, next grammar, that is S goes to AS, BS or BS, AS, then null, right? So this is the grammar given, and check out this grammar is ambiguous or unambiguous grammar. ओके, फर्स्ट थिंग स्ट्रिंग आपको ऑब्जर्व करनी पड़ सकती है खुद से, राइट? ओके, अभी के लिए मैं स्ट्रिंग देता हूँ, यू कैन चेक फॉर दिस स्ट्रिंग इज A B.
ambiguous. Okay,